Assalamu alaikum everyone, my name is Mohammed Bilal Masood और we are back with another video। आज की वीडियो है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन बॉडी बिल्डिंग फील्ड जो कि है बाय किंग कमाली। एक यूट्यूब चैनल है इनका जिसका नाम है जनरेशन आयरन फिटनेस और ये एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर भी हैं और एक ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं रिगार्डिंग बॉडी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, डाइट से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स कवर करते हैं। जो आज की वीडियो है वो इस बारे में है कि जो लोगों ने, जो फैंस ने इनसे क्वेश्चंस किए हैं उसमें से 10 क्वेश्चन इन्होंने चूज़ किए हैं और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन बॉडी बिल्डिंग फील्ड। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होंगे और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें सेकंड 5 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि 10 क्वेश्चंस हैं और वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि वीडियो आपको समझ भी आए और आप उसको एंजॉय भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Welcome to another episode of King's World. All right. So, every week I like to do something a little bit different, and we go over subject matters that most of these internet shows or people that don't talk about. I love to bring you guys the stories and all the stuff that I went through during my crazy IFBB days. But to be honest with you, this week, it's about questions. You guys are really coming through, and I'm loving this right now because all of you and a lot of you are just hammering me with questions. And I was going down one by one and I was like, holy, I can't just sit back and just do 3 a week because I'm going to get so far behind. So what I did is I picked out some of the best ones. Some of them are pretty stupid. Some of you guys are real dumb. Come on, don't ask the dumb questions. Be asked the legitimate questions, okay? Or because the dumb ones I'm not going to answer. So this show this week is going to be called All Questions from the Fans and the Freaks. So here we go. 10 questions answered by the king. Question number 1 comes from Shiva. King, how do I achieve paper thin skin throughout my body? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फैन ने पूछा है कि पेपर स्किन कैसे आप अचीव कर सकते हैं। पेपर स्किन मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं उनकी स्किन बहुत जो है वो थिन होती है और मसल्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और वेस्कुलरिटी होती है उस पर। तो वो स्किन अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं और उसका में मतलब क्या मेथड्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं आप। तो I'll try my best to cover all the questions कि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूं और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में सेकंड 5 क्वेश्चंस होंगे। Thin skin throughout my body. I can't seem to achieve it in my lower back and glutes. Okay, Shiva. There's no magic pill. There's no secret. You have to diet and you have to do your cardio. A lot of the paper thin skinness, I know what you're talking about. A lot of people always say, well, how do I get more veins? Well, veins are genetic. Okay, vascularity is genetic. If you want that paper thin skin, you just have to suffer. See, what you guys have to understand is that there's next level suffering. You think you're suffering. A lot of people that come to me, they've competed before and they've done well, but they haven't achieved that look, and they're very confused. Like, King, I don't understand how you guys at the pro level achieve that crazy. Well, that's because we take it to crazy levels, okay? Stop thinking about drugs. I know that's exactly what you're thinking about right now. You're saying to yourself, oh, King, it's the drugs. Stop with that, okay? We're putting the drugs aside right now. We're talking about dieting and cardio. It's next level suffering. That's what it comes down to. Let me say it one more time. Next level suffering. You have to take yourself to the point where you literally, I give this example a lot to a lot of people. The last 2 weeks before my shows, I would do my cardio with my eyes closed. अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि पेपर थिन स्किन जो है वो अचीव करने के लिए कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, कोई मैजिक पिल नहीं है और ना ही तो कोई ऐसी आप ड्रग्स ले सकते हैं
ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिससे आपकी पेपर थिन स्किन बने। इसमें कुछ जेनेटिक्स का काम है, जो आपके जीन्स होते हैं, जो आपके जेनेटिक्स होते हैं उनका काम है, और कुछ जो है वो आपका नेक्स्ट लेवल सफरिंग, आपका वर्कआउट डिपेंड करता है। तो अगर आपकी पेपर थिन स्किन नहीं है, आप जो है वो उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल सफरिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जो आप रेगुलर करते हैं एक्सरसाइज, उससे हट कर आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो आपको मतलब कि पेन दे, जो आपको जिसमें आपको सफरिंग करनी पड़े, और जो है आपकी बॉडी को कोई एक जिस तरह आप कह सकते हैं कि शॉक टाइप चीज़ मिले, और जिससे बॉडी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाए। तो उसके लिए वो कहते हैं जी कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जी कि जब तुम कंपटीशन खेलते हो तो कैसे अचीव करते हो ये अपने गोल्स। तो वो कह रहा है कि मैं जब कंपटीशन खेल रहा था तो मैं आखिरी दिनों में कार्डियो करता था, तो मैं अपनी आंखें बंद करके कार्डियो किया करता था। तो मेरा जो साथ मेरा पार्टनर है वो मतलब मुझे मारता था और कहता था कि क्या हो गया तुम्हें, आर यू ओके और डूइंग वेल। तो मैं उसको कहता था हाँ मैं ठीक हूँ। तो इसका आंसर यही है कि आपको जो है वो नेक्स्ट लेवल सफरिंग करनी पड़ेगी, अपना वर्कआउट जो है वो एक इंसेन लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। मतलब कि जिस तरह जिसमें बंदा अपने आप को तोड़े। लाजमी नहीं है कि आप बहुत हैवी वेट लिफ्ट करें, बहुत हैवी वेट लगाएं, और ये भी नहीं है कि आप कोई क्रेज़ी एक्सरसाइज करें। इसमें यह है कि आपको ट्रिक्स यही होंगी कि आपने देखना है कि आपकी बॉडी जो है वो किस टाइप की गेम्स आप लगा रहे हैं तो रिस्पॉन्स कर रही है। तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप की गेम्स इस तरह के कुछ होती हैं वो बॉडी वेट पे गेम्स होती हैं, कुछ होती हैं वो डंबल्स पे होती हैं, कुछ होती हैं वो मशीन पे होती हैं। तो आपको डिफरेंट वेरिएशन रखनी पड़ेंगी गेम्स की, और फिर चेक करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी किस पे क्या रिस्पॉन्स दे रही है। Because I noticed if I kept my eyes open, my eyes kept rolling back, so I kept closing my eyes. My training partners would be freaking out. I remember Gabe used to look at me and punch me once in a while and say, "You all right, man?" I'm like, yeah, I'm all right. You know, that's next level suffering. Now, there is a little old school trick that we used to, but you have to be able to get your hands on this. It's called thiomucase. और दूसरी चीज़ मुझे बता रहा है कि एक ओल्ड स्कूल है, मतलब ओल्ड स्कूल जो चीज़ यूज़ करते थे उसके बारे में है कि एक थायोम्यूज़ टाइप की कोई क्रीम होती है, और डिफरेंट किस्म की क्रीम मिलती हैं, उनको मिक्स करना पड़ता है, और मिक्स करके आप अपनी उस बॉडी पार्ट पे लगा सकते हो जहाँ पे आप पेपर थिन स्किन चाहते हो। तो उससे कुछ हद तक आपको जो है वो डिफरेंट गोल्स मतलब कि आपका अचीव हो सकेगा, और आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलेगी विदाउट मतलब कि नेक्स्ट लेवल सफरिंग करने के बगैर। लेकिन वो कहता है कि ये शॉर्टकट है, और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी बॉडी को खुद चेक करो कि वो किस चीज़ पे क्या रिस्पॉन्स कर रही है, और उस टाइप की गेम्स लगाओ। If you can get your hands on real, not that crap that you see on these message boards and all these little places where you can get, oh, this is thiamine. No, the real thiomucase comes from France. If you could get yourself this cream, use that with the combination of DMSO. You have to mix the DMSO correctly. I'm not going to get into that, but it's the combination of DMSO and thiomucase on the specific targeted areas, lower back, glutes, and that will thin your skin out a little bit. Thin skin, suffer. You gotta suffer. Question 2 comes from Nick Ward. तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि कितनी दफ़ा आपको एब्स लगाने चाहिए एक बंदे को, जो है वो आम तौर पे कितनी दफ़ा एब्स जो है उनका वर्कआउट करना चाहिए। एब्स मतलब 6 पैक्स का वर्कआउट करना चाहिए। How often should someone work out abs? Great question. I'm hearing every other day to every day to only sometimes a week before a show. Can you please shed some light on this? Okay, so Nick, abs. It comes down to the word that a lot of you guys hate hearing from me, but I'm going to say it again, genetics. If you got them, you got them. I mean, listen, haven't you guys seen some of these athletes or basketball players or soccer players? Look at Ronaldo. You know, he has the six-pack. You're never going to see Messi with a six-pack. It's not going to happen. But some people have it. So you have to work with your genetics. And personally, I can only talk about my own personal experience. I did not need to work abs. I worked abs maybe starting at 6 weeks out,
maybe once, maximum twice, but it wasn't even really abs. It was just squeezing, maybe a couple of reps here and there, but posing mostly in the mirror. So you have to go with what God gave you, what your parents gave you, use your genetics, and squeeze. That is the key to abs. It's the squeezing and the squeezing exercises. It's much better to get that mind-muscle connection than to kill yourself and build a blocky waist. Squeeze. तो क्वेश्चन नंबर 2 का उसने ये आंसर दिया है कि आपके एब्स में भी जो है वो एक जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर तो आपके एब्स हैं तो वेल एंड गुड, आपको इतने एब्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके एब्स नहीं हैं तो आप स्क्वीज़ वाली गेम्स लगा सकते हो जिसमें आपको एब्स जो हैं वो स्क्वीज़ करने पड़े और जिनसे आपकी जो का फैट है वो लूज़ हो और आपके एब्स प्रोमिनेंट हो। तो उसने एग्जांपल दी है कि जैसे कि रोनाल्डो और मेसी है, दोनों फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन रोनाल्डो की अगर आप फिज़िक देखें और मेसी की देखें तो रोनाल्डो के 6 पैक्स हैं, लेकिन वो कहता है कि मेसी कभी भी 6 पैक्स नहीं बना सकता, या मतलब कि वही चीज़ करते हुए उसके 6 पैक्स नहीं हैं क्योंकि उनके जेनेटिक्स में डिफरेंस है। तो उनके डिफरेंस होने की वजह से कुछ जेनेटिक्स का रोल है और बाकी जो रह गया वो वर्कआउट रह गया। तो वर्कआउट में आप वो गेम्स करें जो एब्स को स्क्वीज़ करें, फैट बर्न करें और आपके एब्स प्रोमिनेंट करें। Question 3 comes from Ant171. King, who had the most positive influence in your bodybuilding career? तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हु इज़ द मोस्ट पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर ऑफ योर बॉडी बिल्डिंग कैरियर, मतलब कि आपके बॉडी बिल्डिंग कैरियर का मोस्ट पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर जो आपको इन्फ्लुएंस करता हो, जिसने आपको पुश किया हो, जिसने आपको एक कहते हैं कि आपकी उसकी पर्सनैलिटी देख के आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हो, तो वो कौन था? This is simple. Nasser El Sambati. Nasser, rest in peace. You know, he was my idol. I looked at him as the greatest thing, and he was a god to me. And for him to take me under his wing and show me the ropes and teach me the business of ins and outs of bodybuilding and what it meant to be a professional. It didn't necessarily mean you had to win, but win the crowd. That's what he always told me. He said, win the crowd. Make sure you win the crowd. If you win the crowd, you become very, very popular and rich. That's how you do it. That's my impression of Nasser. So Nasser El Sambati, he was the best. He showed me everything. And तो वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द ग्रेट बॉडी बिल्डर ऑफ ओल्ड स्कूल नासिर गेम भी करता था, इसको ट्रेन भी करता था, और ये कहता है कि मेरे लिए एक उस्ताद की तरह था और मैं उसको एक गॉड की तरह देखता था। मतलब जिस तरह आप गॉड को रिस्पेक्ट देते हो, मैं उस तरह उसको रिस्पेक्ट देता था, और वो मुझे हर चीज़ में मोटिवेट करता था और मेरे वर्कआउट में हेल्प करता था। और वो मैं जब भी कंपटीशन खेलने जाता था तो मेरे साथ उसकी लंबी लंबी कन्वर्सेशन होती थी कि तुमने क्राउड को जीतना है, और जब तुम क्राउड जीतोगे तो जो है वो तुम पॉपुलर हो गए, और जब पॉपुलर हो गए तो तुम रिच हो गए। तो जो है उसने अपनी लाइफ का बताया है कि नासिर, वन ऑफ द ग्रेट बॉडी बिल्डर फ्रॉम ओल्ड स्कूल। I remember when we went to Hawaii to guest post together, we sat down and we talked. You know, on the beach we talked, and in the restaurants we talked, and he loved coffee. Oh my God, did he love his coffee. So when we sat down and ate the coffee, he drank his coffee, and I would ask him questions, and you know, I really picked his brain. And he was a very special person, and I miss him a lot. And again, the original beast from the Middle East, Nasser El Sambati. वो कह रहे कि हम कंपटीशन से पहले बीच पे बैठते थे तो हम मतलब कि डिस्कशन करते थे, हम बातें करते थे, और उसको कॉफ़ी बहुत पसंद थी तो वो हर वक्त कॉफ़ी पीता था, और हम बस बातें करते थे, और वो मुझे यही चीज़ें समझाता रहता था कि तुमने कैसे कम्पीट करना है और तुमने कैसे बाकी चीज़ें करनी है। और ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी, वन ऑफ द ग्रेट पर्सन। Question number 4 comes from Alex Cruz. Alex asks, what's better for hardening up, Tren or Masteron? Oh, here we go. All right, so I picked. So क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये है कि what's better for hardening up, Tren और Masteron? तो ये 2 टाइप के स्टेरॉइड्स हैं, एक ट्रेन होता है और एक Masteron होता है। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स फार्मूला हैं
जो स्टेरॉइड्स होते हैं। तो हार्डनिंग अप मतलब कि जो मसल की एक हार्डनेस होती है और एक शेप होती है, वो उनके लिए दोनों में से कौन सा स्टेरॉइड आप कह सकते हैं या कौन सा सप्लीमेंट जो है वो बेहतर है ज़्यादा। तो उसके बारे में वो ये कह रहा है कि कुछ लोग कहेंगे कि आप स्टेरॉइड्स के बारे में क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है तो उसके बारे में मेरा बताना बनता है अगर मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो। Take this one because I knew a lot of people would want to hear this. A lot of you knuckleheads like to hear stuff like this. So, trend master on, which direction you want to go? You know me, I'm going to tell you the truth, but I'm going to tell you from my own personal experience. If I go from my own personal experience, I can't stand trend. Trend gives me an awful feeling. It gives me a certain, yes, it's a hard look, but it's almost like a stringy hard look. I don't like it. It's the feeling it gives me, and of course, the dreaded, the worst. I don't know if you've experienced it, and I hope you never experienced it, called the trend cough. Folks, you literally feel like you're going to cough up your entire organs out of your mouth. Now imagine that for 30 minutes straight. It is the worst. I've had girlfriends watch me do it and cry. Oh, you're gonna die. Look at you. I'm like, just shut the 30 minutes of that. No thank you. Trend, you can suck my Persian, you know what. Get out of my face. Master on, a lot cleaner, a lot better, smoother, nice. तो वो ट्रेन के बारे में बता रहा है कि ट्रेन जो है वो मैं मतलब पर्सनली नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो कह रहा है मैंने जब ट्रेन ट्राई किया था तो उसमें ये होता है कि एक उसका आप कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट ये है कि एक ट्रेन कफ़ के नाम से आपको खांसी लग जाती है, उसका नाम है ट्रेन कफ़। तो उसमें आपको इस तरह लगता है कि जी मैं जब खांसी करूँगा तो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। और जब आप गेम कर रहे होते हो या आप जब वो यूज़ कर रहे होते हो और साइकिल में होते हो तो कंटिन्यूसली 30 मिनट्स 1 आवर आपको जो है वो खांसी लगी रहती है, और वो एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है और मैं नहीं चाहूँगा कि वो एक्सपीरियंस आपके साथ हो। It gives you a nice hard round look, plus it gives you the veins and all that stuff. It gives you that hardness look without the feeling of that stupid trend. Personally me, master on. Okay, question number 5 comes from Andy Windsor. Andy, he says, तो वो कह रहा है कि मैं आपको मैस्ट्रॉन रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैस्ट्रॉन जो है वो एक हार्डनिंग लुक भी देता है, वेस्कुलरिटी भी देता है और आपको अच्छी शेप भी देता है। और साथ साथ जो उसका और ट्रेंड में फ़र्क है वो ये है कि आपको वो कफ़ नहीं होगी जो मुझे हुई थी, और जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था वो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो। बिकॉज़ कि जब मुझे खांसी होती थी मैं जिम में होता था तो मेरी जो गर्लफ्रेंड्स थी वो मुझे देखती थी और कहती थी कि तुम मर जाओगे जिस तरह तुम मतलब खांसी कर रहे हो और तुम्हें कफ़ हुई हुई है। तो मैं उन्हें कहता था कि तुम लोग अपना काम करो तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वो कहते हैं इसी वजह से मैंने जो एक टाइम पीरियड गुजारा है मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो टाइम पीरियड गुजारें, तो इसलिए वो ट्रेन को कंसिडर नहीं करेगा। अच्छा जी, तो अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द बेस्ट बॉडी बिल्डर दैट नेवर वेंट प्रो। कौन से बहुत बेस्ट बॉडी बिल्डर्स आपकी नज़र में हैं जो प्रो नहीं गए, मतलब प्रो आपको पता होगा जो कंपटीशंस होते हैं उसमें प्रो कार्ड्स होते हैं, आपकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं, फिर जाके कहीं आप ओलंपिया लेवल को अचीव करते हैं। तो कि जो ओलंपिया लेवल तक नहीं पहुँचे वो कौन से आपकी नज़र में बॉडी बिल्डर्स हैं। तो उसने 4 नाम लिए हैं और वो 4 नाम कौन से हैं। who is the best bodybuilder that never went pro? Another great question. Okay, you know, I gotta mention 4 people here. These guys should have gone pro. These guys were, they even in today's standards would have been very competitive. Number 1 on my list would be Matt Mendenhall, the great white hope. I mean, this. तो पहले नंबर पे उसने नाम लिया है मैक मेंडनहॉल, वन ऑफ द ग्रेट बॉडी बिल्डर, और उसके बारे में वो कह रहा है कि उसकी बहुत अच्छी फिज़ीक थी, बहुत अच्छी जो है वो शेप थी,
और एक मतलब अच्छा जवान था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से जो है वो नहीं प्रो तक पहुंच सका। This guy was amazing. He had the size, the looks, the total package. Just couldn't pull it together. You ask me why? Because he ran up against Ronnie Coleman, Flex Wheeler, Chris Cormier, Kevin Levrone. He just came at a time where the super freak Hall of Famers. वो जी कह रहे कि उसकी वजह ये थी कि वो प्रो तक क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि जिस टाइम पे वो आया था उस टाइम बहुत सारे और अच्छे बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो उन्होंने भी कम्पीट किया ही था और वो पहले से उस लाइन में जा रहे थे, लेकिन उसने एक गलत टाइम पे, मतलब उसका टाइमिंग इस तरह की थी कि वो गलत टाइम पे उसने कम्पीट किया, जबकि जिस टाइम रॉनी कोलमैन और जे कटलर और फ्लेक्स वगैरह बाकी काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं जो कि बहुत अच्छी शेप में थे वो कम्पीट कर रहे थे, तो उसके होते हुए उसने कम्पीट किया, तो एक बहुत टफ़ कंपटीशन था जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सका। Were competing against him. It was just bad timing. Absolute bad timing. Edgar Fletcher. Edgar Fletcher. Second one is AK Fletcher. AK Fletcher का वो कह रहा है कि बहुत अच्छा वैक्यूम था, एक कंप्लीट पैकेज, उसकी बॉडी, उसका साइज़ सब कुछ था, लेकिन उसकी एक कंडीशनिंग जो थी, कंप्लीट कंडीशनिंग, मतलब कि आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है और जो आपको थोड़ा प्रोमिनेंट करती है बाकी बॉडी बिल्डर से, वो चीज़ उसमें नहीं थी। और उस टाइम जब उसकी इतनी अच्छी बॉडी थी तो जो कह रहा है हमारा प्रेसिडेंट था उसने उसको इनवाइट किया। Another guy, absolutely amazing, one of the best vacuum front double bicep poses, huge, super heavyweight, just couldn't get his conditioning. And I remember he was so good, and this is a true story, that our president, Jim Mannion, actually brought him to Pittsburgh and made him stay with him so he can keep an eye on him so he wouldn't cheat on his diet. And he still got outside and went to a fast food place and cheated on his diet. Edgar Fletcher, if he had just nailed his conditioning, amazing. Okay, next gentleman. This next gentleman, they gave him a pro card. He went back to Nigeria and they let him win the Nigerian national championship to just hand him a pro card. It was an absolute joke. If you guys can go and Google the Nigerian championships when Victor Richards is his name. When Victor Richards competed, you will laugh. तो थर्ड पर्सन है विक्टर एक नाइजेरियन बॉडी बिल्डर है और वो कह रहा है कि उसने नाइजेरिया में कंपटीशन खेला था, लेकिन अगर आप नाइजेरियन बॉडी बिल्डिंग करके देखें गूगल तो वहाँ पे कोई इतने ख़ास बॉडी बिल्डर्स नहीं थे, तो और वो एक ऐसा बॉडी बिल्डर था कि जो कि बहुत प्रोमिनेंट था और उसका साइज़ बहुत अच्छा था, उसकी फ़िज़िक बहुत अच्छी थी और आप कह सकते हैं कि वो भी एक कंप्लीट पैकेज था, लेकिन उसको उन्होंने प्रो कार्ड दिया लेकिन नाइजेरियन कंपटीशन में दिया जो कि ना होने के बराबर है, तो उसने इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिया तक ही आया। Because everybody else was like skinny Africans against this Mongolian huge giant freak of a man. It was just a joke. But Victor Richards, if he wanted to compete at the Nationals, the USA's, he would have easily won. Just an absolute freak of nature. The only man who could stand next to Dorian Yates at his prime and match him pound for pound in mass. Victor Richards and Gerard Dente. तो विक्टर रिचर्ड का वो कह रहा है कि उसकी बहुत अच्छी बॉडी थी, अगर वो कम्पीट करता ओलंपिया लेवल पे तो बहुत इजीली अच्छी पोजीशन हासिल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं कम्पीट किया और वो नाइजेरियन कंपटीशन जो उसने खेला उसमें अगर आप जाके देखें, मतलब या उसकी वीडियोस चेक करें और आप उसको गूगल करें तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत पतले पतले से जो हैं वो अफ्रीकन्स थे, लेकिन ये एक मंगोलियन जाइंट था वहाँ पे, मतलब कि इसकी बॉडी बहुत अच्छी थी और इसकी अच्छी फिज़िक थी जैसा कि पिक्चर में आपने देखा। तो इन तीनों की मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की, लेकिन जो फोर्थ वन इसने नाम लिया है उसको मैंने काफ़ी ढूंढा है लेकिन मुझे उसकी पिक्चर नहीं मिली। Yes, the Gerard Dente of MHP. Gerard, good look at total package, another Matt Mendenhall. Good looking guy, symmetry, size, the whole package. Again, he ran into a certain time with certain people, just couldn't get over that hump. Those are my top guys that should have gone.